mindbeszélgettetek tegnap a Dorkával, mi volt a probléma? Megsúrolta a hajamat és közben egy picit nevetett. Értem. Hát az biztos rosszul esett neked. Igen. De szerintem ő szeret téged csak. Igen. Néha összekaptok. Te is szereted őt? Igen. Hát néha nem úgy tűnik. Hát néha úgy játszunk, hogy picit durván. De néha sokat harcoltok. Hát az igaz. És ez hogy fér bele abba, hogy szeretitek egymást? Nem tudom. No, még ég a tűz. Igen. De most már jobban érzem a tablet. Úgy, de gyorsan kész lettél. Majd beszélned kéne vele, nem? Emi? Azt mondtuk reggel, hogy már örökre legjobb testvérek. Most már a legjobb tesók vagytok? Az Igen. szuper, hát azt nagyon jó hallani. Pillangó jön! मेरे को ना शांति अच्छी लगती है। उस दिन मेरा बर्थडे था और उस दिन हमने केक भी काटा था। सब आए थे। मेरी मम्मी के गांव से भी और पापा के गांव से भी। और पापा के दोस्त है ना एक, उनके दोस्त भी आए थे। वो नहीं आए थे बस। और नानी भी आई थी। मैं क्लास 4th में पढ़ता हूँ और मेरा भाई क्लास 6th में पढ़ता है। और हम स्कूल में खेलते भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं और बातें भी करते हैं। सबसे ज़्यादा बात किसके साथ करते हो? अपने दोस्तों के साथ। मेरे स्कूल में 2 दोस्त हैं, एक चाचा का लड़का है और एक ऐसी है, वो अंकल का है वो बेटा। मेरा भाई अच्छा है और हम खेलते भी साथ में और लड़ाई भी होती है कभी कभी बीच में। मेरे को खेलने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। मेरे को खेलना कम अच्छा लगता है। मेरे को खेलने में स्विमिंग अच्छी लगती है और मोबाइल में गेम खेलना अच्छा लगता है। मेरे को जानवरों में से डॉग और कैट और हैन। सब नहा रहे थे, इधर नीचे के भी आए थे, चाचा भी थे। और अब मैं डर रहा था, मैं कोने में था ना, नहा रहा था। और तब चाचा ने बोला कि अंदर जा, मैं तेरे को बचा लूँगा, सब भी यहाँ पे। तब मैं डर रहा था,
तो धक्का दिया भैया ने मेरे को, तब मैं तैरना सीख गया था। Ahogy ez történt a Dorkával, akkor anyának gyorsan kiabáltam. Én csak azt láttam, hogy földön feküdt, de utána gyorsan anyát hívtam, és anya apát hívta. És utána így anya mosott hajat, és így fölötte állt az anya, így a habos volt a haja, és így csöpögtetett a feje fölött a Dorkának, és így nagyon félt az anya, és így anya próbálta így hogy visszajöjjön hozzánk így. A kórházban már jobban volt a Dorka, kekszet meg teát itt megevett, és neki volt a legjobb, mert ott tudott videójátékozni ott a kórházban, de csak egyszer videójátékozott, de többször nem. Amikor hazajött a kórházból, ilyen nagyon öröm született bennem, és így nagyon örültem. Jó étvágyat! Jó étvágyat, gyerekek! मम्मी सब सारा घर का काम करती है और गाय के लिए घास लाती है और हमारे लिए खाना बनाती है। मेरे को पापा बहुत अच्छे लगते हैं। पापा ड्यूटी करते हैं, घर का काम भी करते हैं और गाय के लिए घास भी लाते हैं, मुर्गों के लिए चारा भी रखते हैं और पानी भी रखते हैं। प्यार का मतलब ये है जो हमें अच्छा मानते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं। जैसे कि जैसे मम्मी पापा रखते हैं। कैसे रखते हैं मम्मी पापा? हमारा ख्याल रखते हैं। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्या करना? हमें सबके साथ रहना चाहिए और सबका ख्याल रखना चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए। अबे तू कुछ भी शर्म आ रहा है तो बोल, मैं कुछ भी बोल दे, अपनी मर्जी से कुछ भी बोल, शर्मा मत, तू बोलते रह बस, तेरे को बस बोलना है। जब तू IPS YPS बनेगा तब तू क्या जवाब देगा? सिरेगा चुपचाप। अच्छा हाँ, क्या बनना है बड़े होके? क्या? टीचर, आर्मी। तुम आर्मी में जाना? मैं और मेरे मामा का लड़का है आर्मी। तो टीचर क्यों बनना है यार? लोगों को पढ़ाने। Hát a szeretet nekem azt jelenti, hogy a családomat, meg a barátaimat, meg az állataimat,
meg sok minden szeretet. Olyan érzés, mintha így egybe lennék anyával. Mintha egy lenne az anyukám, de pedig ketten vagyunk. Mintha egy lennénk együtt, de pedig ketten vagyunk. Szeretem a szemedet. Szeretem, hogy vagy velem. Szeretem a testedet. Szeretem a lelkedet. Szeretem a hangodat. Szeretem a hajadat. Szeretem az eszedet. Szeretem, hogy szeretsz. Amíg nem ismersz, ne mondj semmit rólam. Hogy honnan jöttem, hogy merre tartok én. Úgyis hazugság lesz minden egyes szóban. Mert aki nem ismer, az nem is lát belém. Szerelem az, hogy kiállsz a másik mellett. Még ha nem is mindig értesz egyet vele, te tudod, hogy a párod az nem akar neked rosszat, és itt most fontos leszögeznem, hogy a szerelmedről beszélünk. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy a szerelmed nem áll ki melletted, a szerelmed mindent ellenez, ami te vagy, onnantól kezdve szerintem nem is lehet szerelemről beszélni. Én nem szeretek általában emberekkel ölelkezni úgy általában, meg hasonló, de nekem nagyon jól esik, hogy megölelhetem a páromat, kezét megfoghatom, ráhajthatom a fejemet a vállára. Viszont ez valamiért nekem kicsit kényesebb, hiába szeretem a családtagjaimat, szeretem őket, nekem ez a puszilkodás, ölelkezés, mivel kicsit zárkózottabb vagyok, ezért ez nekem sokkal nehezebbre esik. A szívem nagy, de vihar vert a lelkem, és a kelleténél mindig nagyobb a szám. De igaz vagyok, és soha el nem felejtem, hogy mit tanított az életről apám. Myself Tanishka, and I have graduated from 12th class this year only, and currently मैं भी एक resort में front office का training भी कर रही हूँ and psychology honors भी कर रही हूँ उसके साथ साथ. I've recently turned 19 as well, so फिलहाल तो घर पे मम्मी पापा दादी छोटी से फैमिली बस. I think मतलब बचपन से ही एक तो मतलब जैसा भी जब लोगों को देखती हूँ या फिर किसी के बारे में सुनती हूँ, इधर थ्रिलर हो, क्राइम हो या नॉर्मल भी हो, जैसे आजकल मेंटल अवेयरनेस के बारे में बहुत चल रहा है, तो लाइक वो इंटरेस्ट रहता है कि मतलब सामने वाले के दिमाग में हाउ डज़ द ह्यूमन माइंड वर्क, हाउ डू इमोशंस वर्क, और मतलब क्या लोग फील करते हैं, जो इनर टर्मोइल्स होते हैं, मतलब कैसे उनकी हेल्प करी जा सकती है. एंड इट इज़ इवन गुड फॉर आवरसेल्व्स आई गेस टू नो अबाउट हाउ साइकोलॉजी वर्क्स. तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था हमेशा से. ज़्यादा फ्रेंड्स अब नहीं हैं मेरे कुछ टाइम से, स्पेशली कोविड के बाद से. मैंने 1 साल स्कूल भी ड्रॉप किया था 10th में, उसके बाद मैंने 11th में वापस ज्वाइन किया था. बट आई थिंक मॉम, सबसे ज़्यादा मम्मी से ही बात करती हूँ, सबसे ज़्यादा. लाइक मेजॉरिटी ऑफ टाइम, यू कैन इवन से 24/7 आई एम विद माई मदर ऑल द टाइम. जब से मैं छोटी थी तब से,
इवन माई फ्रेंड्स जो मुझे जानते भी हैं वो भी बोलते हैं कि तनिष्का हमेशा सिर्फ मम्मी के साथ ही हैंग आउट करती है, हमारे साथ नहीं करती। पापा के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं होता बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ टाइम ही इज़ आउट। का काम ऐसा है, सुबह सुबह चले जाते हैं, कई बार जल्दी आ जाते हैं, जैसे आज घर पे हैं जल्दी, कई बार नहीं आते, रात को आते हैं, कई बार बहुत लेट हो जाती है, रात को जाते हैं, या रात को आप बहुत लेट आते हैं। तो डॉक्टर हैं, इमरजेंसी, कभी भी फिर इतना टाइम स्पेंड नहीं हो पाता मेरा, मम्मी के साथ ज़्यादा होता है। Először azt tudnám megállapítani, hogy miért látom azt, hogy ő szerelmes belém, ugyanis ő tényleg sok mindent szeretne megtenni nekem, ami miatt azt érzem, hogy ő tényleg szeret, ő nagyon szeretne a kedvemre tenni, tényleg mindent megtesz, hogy a kedvemre tegyen, és én ezt próbálom neki visszaadni. Ezt nagyon erősen szeretném neki, hogy próbáljak minél jobban a kedvére tenni. A legrosszabb, amikor nem te vagy a szomorú, amikor párkapcsolatban vagy, a legrosszabb, amikor a másikat látod szomorúnak. És mindig próbálod ilyenkor felvidítani, ha nem is tudsz mást, akkor átöleled, és akkor addig öleled, amíg el nem enged. Én próbálom minél jobban átadni a szeretetemet, hogy jó kedvébe járjak. És nagyon félek attól, hogy ez nem sikerül. Lehető legjobban ettől félek, hogy nem tudok szegénynek a kedvére tenni. एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, प्रेशर बहुत होता है आज की डेट में, कंपटीशन इतना है हमारी कंट्री में, जॉब्स नहीं मिलते हैं, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी हाई होते हैं, स्पेशली फॉर मिडिल क्लास पीपल लाइक अस, राइट। एंड उसके बाद फिर पेरेंट्स से बात नहीं करते बच्चे। लाइक आई एम थैंकफुली माई पेरेंट्स आर क्वाइट मतलब बात करने के लिए दे आर रेडी, लाइक इफ़ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, सो लाइक थैंकफुली I have the freedom to talk about it at home, and like even on other subjects as well, either चाहे वो society के हो, चाहे मेरे बारे में, चाहे किसी भी चीज़। I think the thought that I have to take the responsibility of my family in the future, eventually, being the only child in the family, वो बचपन से ही होता है। You have to grow up and then you have to take care of your family, and that also being a daughter. लोग बोलते हैं बेटी शादी करके चली जाती है, आई एम नॉट लाइक, इसीलिए मुझे शादी के टॉपिक से भी थोड़ा वो होता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बट लाइक आई थिंक वही मोटिवेशन भी वही है और स्ट्रेस भी वही है, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वे, दोनों तरीके से काम करता है। आई फील वेरी स्ट्रेस्ड एट टाइम्स थिंकिंग दैट लाइक हाउ इज़ इट गोइंग टू वर्क। लाइक वही हो जाता है ना कि कंपटीशन इतना है, क्या करना है क्या नहीं, कैसे सेटल होना है इतने सालों में। आफ्टर लाइक आई लेफ्ट स्कूल आई हैव बीन अ पर्सन कि आई एन्जॉय माई ओन कंपनी। अगर मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं आज की डेट में, बट आई नेवर फील लाइक द नीड टू मेक फ्रेंड्स, लाइक आई नीड समबडी विद मी। आई हैव माई सेल्फ, मेरी फैमिली मेरे पास है, दैट स्कूल, दैट आई एम गुड विद इट। सो लाइक एक होता है कि आप लोनली फील करते हो बहुत ज़्यादा, एक होता है कि आप उसको ओवरकम कर लेते हैं, एंड देन एक्सेप्टेंस कि ज़रूरी नहीं है हमेशा कोई ना कोई आपके साथ हो, आप खुद के साथ होने चाहिए, देन आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नो, सेल्फ लव कैन हेल्प यू। अगर आप खुद को समझना शुरू कर दें, अवेयरनेस जैसे बोलते हैं, और सेल्फ लव, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना थोड़ा, like I think that can help with loneliness. I personally think that way. अपना ख्याल रखना is most important. In general, I personally think लव ऐसे सिर्फ बोल के नहीं दिखा सकते। आई थिंक लव इज़ अबाउट सपोर्ट, केयर, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट। दिस इज़ व्हाट लव इज़ बेसिकली। वी कैन कनेक्ट एज अ यूनाइटेड वर्ल्ड। लोग आपस में अगर समझें, सुने एक दूसरे को, तो एक बार को अपना ईगो साइड में रख के, अपना गुस्सा साइड में रख के,
Like communication is the key. Try to communicate first. Mostly, I think 60% or even 70% problems के solution आप बात करके निकाल सकते हैं आराम से. People are not ready to talk. People don't have time to talk basically. उनको जल्दी करना है. तो like झगड़ा हुआ, बात नहीं करी, कोई बात नहीं, छोड़ दिया. I think communication is very important. Amikor a barátnőmre hajtom a fejemet, én azt érzem, hogy biztonságban vagyok. Érdekesen megfogalmazva úgy érzem, hogy az oxitocin kicsit elterjed a testembe, tehát hogy lesz egy kis boldogsághormon, és hogy így hirtelen meg is akarom ölelni, meg hasonló, csak hát ugye mondjuk esetleg egy vonatállomáson nem feltétlen enyelegnék, csak hogy igazság szerint ha szerelmes vagy, az tényleg megfoghatatlan, és egyúttal egy felülmúlhatatlan dolog. Próbálhatod körülmagyarázni, próbálhatod elmondani, de végső soron úgy is nehéz lesz. A szerelmet átélni lehet, nem pedig elmondani. Amíg nem ismersz, nem tud semmit róla. Férjemmel úgy ismerkedtem meg, hogy kosárlabdázás közben elszakította az egyik keresztszalagját sajnos a térdében, és kijártam hozzá házhoz gyógytornáztatni, és az egyik alkalommal nekem nem tűnt föl, hogy ő főzött nekem, meg rendelt olyanokat, amiket én már mondtam, vagy említettem, hogy miket szeretek, és egyik alkalommal, amikor a földön feküdt, akkor mondta, hogy most akkor álljunk meg, amiközben hajlította és nyújtotta a térdét, nagy fájdalmak közepette, és megfogta a lábamat, a combomat, és azt mondta, hogy hát nem érdekli, hogyha többet nem jövök ide, el kell, hogy mondja, hogy ő mennyire megtetszettem neki, és ő mennyire belém szeretett, és magába az érintése, hogy megfogta a combomat, az valahogy még most is érzem, hogy abban úgy minden benne volt, igen. Az érintés, mint a szeretet egyik jele, vagy a szeretet egyik hozzátartozója, az a munkám során nagyon, nagyon jelen van. Azt tapasztaltam, hogy sokkal jobban lehet haladni, illetve sokkal jobban fejlődnek az emberek, ha csak néha-néha egy érintést bele teszek a terápia részébe, vagy a terápia egészébe. Sőt, volt olyan kliensem is, aki
már az elején kérte, hogy most ugye Reni megint majd egy kicsit ott, csak úgy éppen nyomkod már meg a nyakamat, mert az olyan jól esett, és utána olyan sokkal könnyedébb volt, és olyan jobb volt, és igen, nagyon sokan kérik azt, hogy ha lehet, akkor nem az izomcsomó kinyomkodásával, hanem valami egy kicsit finomabb, de érintéssel járó manuális fogást mindenképpen vigyek bele az adott testrészbe. És nem feltétlen a fájó testrészbe, ez is nagyon érdekes. Igen. És csak. Nyuszik összebújtak, az apukájuk esti mesét mondott a kicsiknek, és a kicsiket rövidesen elnyomta az álom, csak Topancs Nyuszi nem akart még aludni. Az anyukája és az apukája is adott neki egy puszit, és hamarosan ő is elaludt. Jó éjszakát, Topancs! Jó éjszakát, Topancs Nyuszi! Hallottad az Oszkárt? És csak Seri. Seri! Majd ilyen mindjárt. Cickó, cickó, cickó. Cickó, cickó, cickó. Cickó, 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 cickó. Hol vannak a madarak, nézd? Hol vannak a madarak? Hol a szarka? A holló? Csip, csip, csóka, akvarjócska, komám asszony kéreti a szekerét, nem adhatom oda, tyúkok ülnek rajta, hes, 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 hes. करीब 2007 से ये शौक़ रहा और उसके बाद खुद सीखा, खुद पढ़ा और जो लोग जानकार थे उनसे मिले, मुलाकात हुई, उनसे पूछा इस विषय के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में और चिंतन मनन के बाद आगे बढ़ते रहे। और जर्नलिज़्म जो था, अखबार पढ़ने का शौक़ था तो पढ़ा, फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने का शौक़ था वो देखा, तो उस तरीके से जर्नलिज्म को पढ़ने का और उसको करने का शौक था। माता जी का तो प्यार है, पहले भी था अभी भी है। वो बोलते हैं कि अभी मेहनत करो, जब बन जाओगे अच्छा कर लेना। खा ले, तू भी खा ले, एक रोटी खा ले, थाली में दे देती। वाह, हो गया, दिमाग दे रहे। किसी को कुछ काम के लिए पैसा दिया था, वो मेरा घर से ही था, तो उन्होंने वो काम नहीं किया बट पैसा लेके चले गए। तो उसके बाद एक फ्रेंड को पता लगा कि उन्होंने बोला कि सच बता देते हैं, ये कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ को साइलेंट रखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, किसी चीज़ को बचाने के लिए। बट उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट के बाद भी बोल दिया। तो उसके बाद से मेरे फादर, तो पिताजी के साथ अब दूरियां हैं, अब वो नज़दीकियां नहीं है, हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते, बस अलग रहते हैं। तो मैं फिर भी अभी उन फ्रेंड को यही बोलता हूँ कि अगर आप ये चीज़ ना करते तो अभी तक मेरे जो रिलेशन थे बिल्डअप करे हुए, वो अभी तक अच्छे चल रहे होते। रिग्रेट यही है कि मैं अभी तक उनको वो नहीं दे पाया कि जो एग्जैक्टली वो चाहते थे। उनको लगता है कि मैं कहीं पे जॉब करूं या कहीं वो करूं, मुझे लगता है कि मुझे अपना काम फ्री करना है। तो मेरा ये है मानना।
एक ना एक दिन बढ़ूंगा आगे. Van egy újfajta szeretet az életemben, mióta megszületett Sára Luizánk. Ez egy teljesen másfajta, mint amit a férjem iránt érzek, vagy a családom iránt érzek. Nem mondom, hogy erősebb vagy gyengébb, de egy olyan, talán olyan mélyebbről jövő szeretet, ami lehet annak is köszönhető, hogy a Sári, ő a pocakomban nőtt föl, és ketten a férjemmel sikerült őt létrehoznunk, és a mi vonásainkat örökölte, és valahogy ez egy ilyen nagyon mély, nagyon erős szeretet. A szeretkezés attól szeretkezés, mert ebben benne van a szeretet. Ugye van a másik fajtája, amit úgy szoktunk mondani, hogy dugás, ami szerintem összehasonlíthatatlan a kettő egymással, hiszen abban hirtelen a vágyak dominálnak leginkább, és maga az talán az ösztön, míg a szeretkezésnél ott van egy nagyfokú figyelem a másik iránt, ami a dugásban nem biztos, hogy benne van. És a szeretkezésnél ott nagyon figyelsz arra, hogy te is jól érezd magad, a másiknak is jó legyen, és jól érezze magát. Nagyon nagyfokú az egymásra figyelés, és szerintem ott olyan, mint hogyha két ember megnyílna egymásnak, és valami egyesülés jönne létre. De ehhez nagyon kell ismerni a másikat. Amikor eléggé szereted a másikat, akkor az azt jelenti, hogy valamit együtt szeretnétek létrehozni, vagy fejlődni szeretne a kapcsolatotok, és hát ebből fog előbb-utóbb születni a szeretkezésből a gyermek. Persze dugásból is tud születni, de az nem biztos, hogy az egy hirtelen jött, felkészületlen dolog. Mit találtál ott? Zsarok? Na leszereled apának? Segítesz? Nem harapő, hanem szavarod. Ezt mindig máshogy mondom. परिवार का सपोर्ट या दोस्तों का, अच्छे दोस्तों का सपोर्ट होना जरूरी है, तो जिससे आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करते हो, कहाँ आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको कुछ करने का जुनून मिलता है. वो आपको सपोर्ट करते हैं, मेंटली सपोर्ट करते हैं, इमोशनली सपोर्ट करते हैं. फ़िलहाल तो मैं एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ऋषिकेश राइटिंग्स, और वो जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ह्यूमंस जो यहाँ पे रह रहे हैं इस शहर के में, वो क्या करते हैं, क्या उनकी स्टोरीज़ है, वो पब्लिश करने की कोशिश करते हैं. और जो ट्रैवलर हैं जो यहाँ आते हैं इस शहर में, इस गंगा को समझने के लिए, इस शहर को समझने के लिए, उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, तो उनके साथ भी वार्तालाप होते हैं. तो उन लोगों को उस चीज़ को मैं शेयर करता हूँ लोगों के साथ. प्यार तो एक नेचुरल फिनोमिना है जो नेचर के थ्रू आया है, और इट कैन बी लाइक इमोशन, टच और केयर. ये प्यार है. ज़रूरत के समय पे खड़े रहना एक प्यार है.
Amióta Sára Lujza megszületett, azóta maga a testiség és a szexualitás egy icipicit hátrébb szorul, hiszen elsősorban ugye a lányunkkal foglalkozunk a nap nagy részében, viszont a születés előtt már beszéltünk erről, hogy mivel mind a kettőnknek nagyon fontos az érintés, ezért amikor csak lehet, törekszünk arra, akár napközben, amíg ő alszik, akár este, amikor már elaludt, hogyha lehet, akkor töltsünk egymással is időt, hogy például egy kávézásnál én az ölébe ülök, elmeséli, mi történt vele, vagy nézzünk egy rövid filmet összebújva, vagy éjszaka az alvásnál minél kevesebb ruhában egymáshoz bújva alszunk el, és erre szüksége van mind a kettőnknek. Szerintem, tapasztalatom szerint életkoronként más-mást jelent. Legalábbis nekem más-mást jelentett a szeretet. Mert hogy ezen a kérdésen így elgondolkodtam, és úgy megpróbáltam visszaidézni, hogy gyerekkoromban ez a szeretet ez mit jelentett, akkor leginkább az jutott eszembe, mert 3-an voltunk testvérek, de a bátyámtól nagy korkülönbség volt, de az öcsémmel együtt nőttünk fel 3 év korkülönbséggel. Ugyanabban az iskolában jártunk, ugyanabban a közegben, és mondjuk amikor az öcsémet meg kellett védeni, vagy az öcsémet történt valami, kiskorában volt egy viszonylag súlyosabb eset, például amikor mentők vitték őt el a lakásunkból, azok mind azok a rettegések, azok a féltések, azok az érzések voltak a legelsők. A szüleimmel kapcsolatban érdekes módon inkább az ő gondoskodásuk jut eszembe, vagy ahogy édesapám, aki elég sokat volt hétköznap távol, mondjuk megérkezik a munkából, azok az érzések, de nem tudom, hogy ezt szeretetnek nevezném-e. Aztán amit egészen biztosan szeretetnek tudok nevezni, az már a nagy kamaszkorban, vagy fiatal felnőttként, nyilván az első szerelem. Én abban a helyzetben voltam, hogy az első szerelmemet azt feleségül is vettem, és 3 gyönyörű gyermek született abból a házasságból. És hát nyilván ott is azért a szerelem, az átalakul szeretetté, amiben nyilván megint más típusú érzések vannak, de hogyha már így a gyerekeimet említettem, én azt gondolom, hogy az volt talán az egyik legerősebb érzés az én életemben, amikor ők megszülettek. Talán nem túlzás azt mondani, hogy szinte földön túli, előtte soha nem tapasztalt érzés volt, amikor a dúla vagy a szülésznő a kezembe adta a megmosdatott lányokat, és először a szemükbe néztem, hát nyilván azok megkönnyezős pillanatok, de visszaidézhetetlenek. A fiam kapcsán pedig az jut eszembe, hogy nagyon sokszor elképzeltem előtte, hogy mennyit fog változni az élet, amikor megjelenik az első gyermek. Ott viszont azt hiszem, hogy a felelősség volt az, amit ott megéreztem. De mind a 3 gyerekkel kapcsolatban ez a szeretet, ez
Ez később, amikor már bonyolultá vált az élet, és sajnos el is váltunk, elváltam az édesanyjuktól, akkor ez nyilván megváltozott. Nagyon rosszul is érintette őket, engem is. Nagyon nehezen állt vissza a kapcsolat, de egészen más típusú kapcsolat lett. De egy valami nem változott, én azt hiszem, nem tudok elképzelni olyan rossz eseményt, olyan szövegkörnyezetet, olyan cselekedetet, ami után elmúlna, vagy elmúlhatna az, amit én szeretetnek gondolok, hogy érzek. Reszi! Reszi! Hello! Szia! Szia! Jó voltál? Egy menhelyről került a Reszi hozzánk, és ezen a menhelyen a különböző kertrecekben, kenelekben voltak a kutyák, ezek számokat kaptak, és ezeket a számokat jegyzeteltük föl hárman. A feleségem, az ő fia, illetve én úgy állapodtunk meg, hogy mind a hárman fölírhatunk 2-3 számot, hogy melyik kutya volt számunkra szimpatikus, és hát egy közös szám volt, ami teljesen egyértelmű volt, az pedig az ő feje fölötti, Reszinak a feje fölötti szám. Ugyanis az történt, áldogáltam, egyedül volt az ő kis ketrecében, ezen a menhelyen, egyébként jól bántak velük, csak ugye nagyon sok kutya volt és nagyon kevés ember, és nem ugatott meg minket, hanem egyesével, egy-egy pillantással ránk nézve nyugtázta azt, hogy itt van most 3 ember, most nézegették, nem tudott vele mit kezdeni. És nem csak, hogy menhelyi kutya ő, hanem már volt előtte egy rossz élménye, amikor őt a menhelyről elvitték, és néhány hónap múlva visszadobták a menhelyre, mondván, hogy rosszul viselkedett az udvaron, talán csirkét, meg macskát is kergetett, és megevett talán egy családi csirkét. Úgyhogy ez a sok rosszaság idézőjelben, ez volt az, ami visszavezetett az ő életében, ami visszadobta őt a menhelyre. És hát ezek után valószínűleg, hogy benne is egy ilyen, hát egy feltétlen szeretet alakult ki, remélem legalábbis az irántunkban, akik ebből a világból kihoztuk, egy bűvályos és szeretnivaló lény. És ez számomra azért felnőttként megélni, ez egy döbbenet volt. वो 2017 की बात है, उससे एक दिन पहले मेरे को वो कैंप लगा था ऋषिकेश में और मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। कैंप से आते ही मैंने रैकेट और शटल मंगवा ली शॉप पे भेज के। मैंने कहा तुरंत ला के दो, तो ये कह रहे ये सारे घर वाले कहने लगे इसे हो क्या गया। मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए शटल रैकेट, और मैं बेड पे बैठ गई और जैसे मेरे को सर ने बताई मैंने वैसे प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी। RPS स्कूल के जो भट्ट सर हैं, उन्होंने मेरे को भरत मंदिर स्कूल के आपके जितेंद्र विष्ट सर हैं जो बच्चों को बैडमिंटन सिखाते हैं, उन्होंने मेरे को उनके पास भेजा और कहा अगर बेटा कोई भी तकलीफ़ आएगी मैं खड़ा हूँ, तुम एक बार जाओ मेरा नाम लेना, वो तुम्हें सिखाएंगे। मैंने कहा नहीं सर सब मना कर रहे हैं, वो भी मना कर देंगे, आप ही कुछ करो मैं आपके पास आई हूँ। बोले नहीं तुम वहाँ जाओ, क्यों मैं कराऊँगा तुम्हें, बाद में अगर नहीं होगा कोई रास्ता मैं देखूँगा। और मैं गई और मैं आज इस बात के लिए उन्हें सर को भी थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मुझे जाते ही तुरंत जितेंद्र बिष्ट जो मेरे आज कोच है, उन्होंने मुझे कोचिंग लेने के लिए हाँ कर दिया। उन्हीं की वजह से आज मैं मतलब जो प्लेयर बन पाई हूँ। ठीक 15 दिन बाद मैं नेशनल पे गई और मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया।
जब मैं 8 मंथ की थी तो मेरे को अचानक ही एक गलत इंजेक्शन लगा था एक्सपायरी। यहाँ के अच्छे जाने माने डॉक्टर थे जिन्होंने मेरे को फीवर में इंजेक्शन दे दिया था, जिसकी वजह से मतलब मेरे हाफ बॉडी में पैरालाइज आ गया था। हाफ बॉडी यानी कि मेरे दोनों पैर, दोनों हाथ और ये आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा था। तो मेरी मदर ने काफ़ी ट्रीटमेंट वगैरह मतलब मेरा करा, लेकिन उस वजह से मेरे एक पैर में और दोनों हाथ में, और जैसे मैं आज आपके सामने बोल पा रही हूँ, ये सब चीज़ ठीक हो गई, लेकिन मेरे इस पैर में उसका असर रह गया। मैं छोटी बहुत थी, मुझे 3 से 4 साल की होंगी। आज भी वो सीन याद आता है कि हमारे घर में एक पुलिस बैठी हुई थी। फादर ने काफ़ी मम्मी को मारा था किसी रीज़न की वजह से, तो पुलिस बैठी हुई थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ था और फिर मैंने कहा था पापा हमें भी ज़रा सी बात पे, जैसे मैं छोटी थी तो मैंने गलती से नोट फाड़ दिया या कोई कैसेट, पहले आपने देखा होगा एक कैसेट चलती है, तो मेरी मदर ने बताया था कि मैंने कैसेट की रील निकाल दी जैसे बच्चे कर देते हैं। तो उन्होंने बहुत उस चीज़ को लेके मारना पीटना मतलब करना ये सब करते थे। और जब वो ड्रिंक नहीं करते थे तो मुझे बहुत प्यार करते थे। सिर्फ ड्रिंक, अल्कोहल जब उनके दिमाग पे चढ़ती थी तो वो संतुलित खो रहे थे अपना मतलब। कहते हैं जब जो चीज़ हमारी लाइफ में लिखी है तो ऐसी ही होती है कि 2-3 साल करते करते पापा के जाने के बाद हम स्टेबल हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई लेकिन फिर खुश भी थे। मैं जब 16 साल की हुई मुझे ध्यान है कि मैं घर में अचानक ही स्लिप कर गई थी और स्लिप करने से मेरी बैक की कोई नस दब गई, जिससे मुझे पता ही नहीं चला कि कब मतलब मेरे पैर में, इस वाले पैर में मेरी वीकनेस आ गई। हमारी अर्निंग अच्छी होने लगी, मैंने फिजियोथेरेपी डॉक्टर को बुलाया, घर में फिजियोथेरेपी कराई। मेरी एक छोटी बहन थी 2, उसमें से एक बहन की मैंने मैरिज करवाई। तो मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ अगर मैं चेयर पे आ गई हूँ, क्योंकि मैं चल तो नहीं सकी, आज तक भी नहीं चल सकती, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। दोस्त, तो मैं क्यों अपनी ज़िंदगी को समाप्त करने जा रही थी? अगर मैंने थोड़ी हिम्मत की तो बहुत कुछ किया। Szociálpolitikába 30 éve kerültem, szinte így van, jövőre lesz 30 éve pontosan, hogy a szociális szolgáltatásokban, a szociálpolitikában dolgozhatok, és hát a személyes, vagy úgy szoktam fogalmazni, hogy a lokális maximumot elérve ebből a 30 évből azért 7-et szociálpolitikai helyettes államtitkárként az államigazgatásban tölthettem. És ami még ennél is fontosabb, hogy tulajdonképp 2 kormánynak a kormányprogramját a vezetésemmel, vagy részben általam sikerült megírni, és hogyha a szakma kapcsán kell a szeretetről gondolkodni, akkor azt kell mondjam, hogy ezen a pályán legalábbis tartósan, egész biztosan nincs olyan kolléga, akinek valahol ez a szeretet nem működne. Hiszen segíteni úgy nem lehet szerintem, hogy ahogy elképzelünk mondjuk egy gépet vagy egy robotot. A szociális szolgáltatás, ami tulajdonképpen segítséget jelenti, a szociális szolgáltatás embertől emberig hat, embertől emberig ér. Hogy ez a szeretet miből táplálkozik, vagy honnan gyűjti hozzá az erőt, mondjuk az a gondozónő, aki nap mint nap felkel és elmegy és segít az embereknek, vagy az, aki minden nap az ágyban fekvők mellé oda megy és ellátja őket, ez azt gondolom, hogy személyenként és családonként is változó, de abban egészen biztos vagyok, hogy ha nincs bennük az, amit nagyon egyszerűen szeretetnek lehet mondani, akkor ez nem működik. Még egy gondolat eszembe jutott, egy problémával rendelkező, egy szó szerint földön fekvő, gondoljunk csak egy hajléktalan emberre,
első segítsége az, amikor az ember odahajol hozzá. Sőt, szó szerint egyébként, és ez számos esetben saját szememmel láttam, hogy működik, voltak olyan orvosok és segítők, akik oda feküdtek egy bajba jutott mellé, és onnan az ő szintjéről, ha fekszik, akkor fekszik, ha ül, akkor ül, az ő szintjétől próbálják meg nagyon-nagyon nagy beleéléssel és nagyon nagy szeretettel az ő felemelését elkezdeni. Azt hiszem, hogy talán ebben a szakmában van a legtöbb szeretet. जो भी लोग हैं एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की तकलीफ़ों को समझें। हर टाइम जो आज एक होड़ लग गई है सिर्फ वो मैं को हटा दें कि मेरे लिए जो हो रहा है बस मैं अपने घर के लिए करूं, अपने लोगों के लिए करूं। अगर आप समाज में प्यार बांटोगे तो आपके पास हजारों गुना प्यार बढ़ के मिलेगा। और जब आप मैं में ही रह जाओगे कि मैं ही सब कुछ अपने लिए करूं, तो शायद एक टाइम आएगा कि आप अकेले पाओगे। प्यार का मतलब यही है कि हम प्यार किसी से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने ट्रस्ट के माध्यम से अपने सारे जितने भी मेरे जैसे भाई बहन हैं उनसे मैं प्यार करती हूँ, उनकी हेल्प करने को करती हूँ। अपने फैमिली की कोई भी प्रॉब्लम है उनके लिए हर टाइम सोचती हूँ कि टाइम है, यही प्यार है। और समाज का कोई भी इंसान दुखी है, कोई इंसान क्या कोई एक जानवर भी, तो मुझे उसके लिए फीलिंग आती है यही प्यार है। एक बैंक में जॉब करती एक लड़की, उसे पोलियो, उसे भी नॉर्मल लड़का मिला, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मेरी भी लाइफ में होगा लाइफ पार्टनर। तो इसलिए ऐसा नहीं कि मेरे फादर जैसे सब हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं हमारे लिए बनी नहीं है। मेरे को लगता है कि मेरे लिए ये बना है, मुझे समाज की सेवा करनी है, लोगों की हेल्प करनी है और उसमें ही खुश रहना है, और मैं खुश हूँ। Az élet szeretetéről szóló egyfajta tanítás, vagy egyfajta emlékként nekem biztosan megmarad, hogy a halála reggele előtti délutánon édesanyámhoz mindannyian bementünk, gyerekek is, nyilván ő maga is tudtuk azt, hogy ez már a vég, és ült az ágyán, már egy nagyon lefogyott és egy nagyon szinte nem is látszott az ágyneműből az édesanyám, amikor a fiamnak még azt magyarázta, hogy ha befőzünk, akkor a befőttes üvegek alá hogyan kell oda tenni egy hideg tárgyat, ami elvezeti őt, és így biztosan jók lesznek a befőttek. Én azt hiszem, hogy ha így a halálom előtti délután erről tudnék az unokáimmal beszélgetni, akkor valószínűleg, hogy hát nem nagyon szomorúan és nem összeomolva érne a vég. Én azt hiszem, hogy ez is hozzátartozik a szeretethez.
Az Isten és az ember között úgy van jelen a szeretet, mint ahogy ember és ember között. Ilyen egyszerűen személy az Isten, 3 személy egy Istenben, és személy az ember. És az Isten ilyen egyszerűen jön közénk, van velünk. Amikor így a szeretetről gondolkozom, vagy próbálom magam számára megfogalmazni, akkor így az jön, hogy mint egy forrás. Szeretet a forrás, aminek részese lehetek, amire csak így rá lehet nyílni. Ilyen egyszerűen, nyitottan, figyelemmel odafordulni. A Szentírásból egy mondat jut így eszembe, hogy Isten szeretete kiáradt a szívünkben, a nekünk adott Szentlélek által. És a mi társaságunk, a Szociális Testvérek Társasága, az a Szentléleknek átadott társaság. Ez a mélyen Istenben, Szentlélekben gyökerező életet próbáljuk napról napra megvalósítani, élni, mélyíteni. És aztán ez a szeretet, amit én megtapasztalok, amit mi megtapasztalunk testvérek, ez az, amit tudunk továbbadni azok felé, akik felé Isten küld, ahol éppen vagyunk. Egyszer egy ima kapcsán egy templomba zsolozsmát imádkoztak. Egy kis csoport. És a zsolozsma az egyház imája, és én azt hallottam, és tudom, hogy amikor az ember így közösségbe az Isten dicséretét imádkozza, akkor ami a saját szívében lévő kérdés, vágy, az felerősödik az Isten előtt. És így ezzel voltam ott ebben az imában. És a zsoltárok végén az a szokás, hogy a zsoltárok végén meghajolunk Isten előtt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, ezt imádkozzuk. És akkor azt éreztem, hogy nem csak a testem hajlik meg Isten előtt, hanem a lelkem is. És ekkor éreztem, hogy valami olyan szabadság, olyan öröm van bennem, amit még így nem tapasztaltam. És az az ellenállás, vagy kérdés, vagy kételj, ami korábban volt bennem, hogy alakuljon az életem, az most így kisimult, és azt mondtam Istennek, hogy most aztán bármit akarhatsz. És aztán így végig gondoltam, hogy milyen vágy is volt bennem, hogy végül is egy nagyon mély szeretetvágy volt bennem. Szeretetet adni és kapni. Csak akkor én úgy tudtam megfogalmazni, hogy ez csak családban, házasságban lehet. És ebben a pillanatban, amikor így betöltött az Isten szeretete, öröme, akkor azt éreztem, hogy ezt a szeretetet, ezt a teljességet, ezt az örömet, ezt így nem tudja senki megadni. ये जो साधु लाइफ का मैं बनारस में अपना शिक्षा दीक्षा किया, चल रहा हूँ 66 से मैं। ये जब मैं छोटा था, बहुत छोटा, एक बार बीमार पड़ा था, तो उस टाइम में जो मेरी माँ थी, मेरे को शंकर जी को समर्पण कर दिया, ये बच जाएगा, बचेगा तो तुम्हारा दंडवत करेगा। जब पढ़ ही रहा था तब उन्होंने बोला कि ये तुम मर गया था, और हम लोग ने ऐसा किया तो उस मंदिर का परिक्रमा करो। और उसी टाइम में संत महात्मा को मैंने देखा, तो मेरे मन में ऐसे हुआ कि जब मैं आदि घर के छोड़ के चला जाऊँ
2 साल तक मैं यही मन में था, मैं चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, और बोलते भी रहते थे मैं इतना दूर चला जाऊंगा कि आप लोग से हमारा कोई मुलाकात नहीं। और संन्यास का मतलब है जब कर्म का नाश हो जाए, कोई हम जो काम करते हैं वो कर्म है, उससे यदि हम छुटकारा पा लें तो सन्यासी होना चाहिए। रियलिटी पहले था 50-60 साल के बाद बनने का, वानप्रस्थ जब होता था लोग सन्यास बनते थे। अभी क्या करता है, कम उम्र में सन्यास, तो वो क्या होता है, उसकी जो इच्छाएं है मरता नहीं है। जब इच्छा नहीं मरता है तो कभी कहीं ना कहीं वो सक्सेस नहीं कर पाता। जो गृहस्थ में है, बच्चे को प्यार देगा तो बच्चा भी उसको प्यार देगा। पारिवारिक संबंध को सही देखना चाहते हैं तो हमको एक दूसरे के साथ अपने को निस्वार्थ होना चाहिए। आसक्ति है, एक बोलते हैं ना, मन मरे माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा मिटे न कहे दास कबीर, है ना। ये जो आशाएं है ना, ये है आसक्ति। आखिर कुछ होता है ना, मेरे ये है ना, ये बन जाएगा तो ये करेंगे, बन जाने के बाद वो नहीं करता है। आसक्ति है ना इसमें, तब वो अहंकार आ गया उसको। काम क्रोध लोभ मोह ये सब जितने चीज उसके पीछे आ गया, उसको आसक्ति में डाल दिया, है ना। ये सब चीज को जो छोड़ देगा वो सन्यास में असली सन्यास बनेगा। Fogadalom szövegét úgy mondjuk, hogy a kezünkben van egy kereszt, amit a közösségtől kapunk. Krisztus áldozatába kapcsolódunk be, amikor felajánljuk magunkat. Alapítunk Slakta Margit, Salkaházi Sára. Második világháború idején a társaság nagyon aktívan részt vett a menekültek befogadásában, a zsidók menekítésében. Az alapító testvérünk, Slakta Margit ezt nagyon fontosnak tartotta, és így a testvéreket is erre hívta. A Salkaházi Sára egy testvér, aki nagyon-nagyon beleállt ebbe a mentő munkába. Ő maga is egy női otthonnak volt a vezetője, ahol sok zsidót menekítettek. És érezte, hogy a társaságnak ez egy nagy veszély. Állandó megfigyelés alatt álltak, és hogy féltette a testvéreket, és belső indítása, elhatározása, az a vágya volt, hogy a társaságot, a testvéreket megmentse. És ő belül kérte az Istent, hogy ha ez lehetséges, akkor inkább ő ajánlja fel az életét, csak a többiek megmeneküljenek. És ezen sokat imádkozott, az előjáróval megbeszélte, lelki atyával megbeszélte, és született egy életfelajánló imája, amit megengedett az előjáró, hogy ezt elmondhassa. És ő ezt megtette, és folytatta ezt a menekítő szolgálatot. És valójában ő volt az, akit egyedül elvittek a nyilasok. Az életünk Isten ajándéka. Ő saját képére, saját hasonlatosságára teremtett bennünket. És ezt a szeretetből
És ezt a szeretetet így elültette mindannyiunkban, mindegyikünknek a szívébe, a lelkébe. Ott él ez a jó, ez a szeretet, ez az élet. Mondhatom, hogy felelős vagyok azért, amit kaptam. Másokért kaptam. एक टाइम होता है, एक एज होता है, जो हर आदमी एक दूसरे से उसका आता है कि मैं उसे किसी से प्रेम करूँगा और प्रेम भी कर लेता है। जब इच्छा पूर्ति हो जाता है तो डिटैचमेंट हो जाता है, तब उसको से अलग हो जाता है। लेकिन प्रेम मतलब क्या? साथी। प्रेम हुआ साथी, होल लाइफ एक साथ जो रहने का प्रक्रिया है, यह है प्रेम। और ये जो कुछ क्षण, कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए होता है तो प्रेम नहीं हुआ, ये तो दुख का ही कारण हो। जैसे कहता है न, वृक्ष कभू न फल बकई, नदी न सींचे, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। ये जो शरीर से किसी का उपकार करो, जो है कर्म और ज्ञान और भक्ति। भक्ति इज द गोल ऑफ लाइफ। जिसमें भक्ति आएगा उसको शांति आएगा, जिसमें भक्ति नहीं आएगा वो तो शांति नहीं आ सकता है ना। ज्ञान में हमें अहंकार हो सकता है, भक्ति में नहीं। Mindenható Isten, gondviselő Atyám, aki végtelen szeretetedből megteremtettél, és jóságos irgalmadból gyermekeddé fogadtál, aki elfogadtad boldog salkaházi sára szűz és vértanú életfelajánlását testvéreiért, közbenjárására add meg nekem azt a kegyelmet, hogy téged egyre jobban szeresselek. Segíts, hogy Sára testvérrel együtt szívből kérjem. Szeretetet gyújts bennem, szeretet Istene. Jöjj Krisztusom, vedd birtokba szívemet mindenestől, és szeress bennem.